Good evening, everyone. We'll start shortly. All right, so welcome all in our weekly webinar, Market Masterclass with Religare. So, in this webinar, we talk about the market performance during the week, followed by our view for the next week, especially for the key indices, sectors to focus on, stocks to track, followed by the Q&A session. In case if you have any query, uh, especially related to any particular sector or theme that you would like to know more about, definitely we can discuss during the Q&A session. And स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज इन केस इफ द टाइम अलाउज डेफिनेटली विल आंसर यू। सो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीकली वेबिनार में मार्केट मास्टर क्लास विद रेलिगेयर। तो इस वेबिनार में हम बात करेंगे नेक्स्ट 20 मिनट मार्केट के व्यू को लेकर। ये हफ्ता कैसा रहा ये एक स्लाइड होगी, उसके बाद सारा टाइम हम स्पेंड करेंगे कि किस तरीके से प्लान करना है नेक्स्ट वीक के लिए। उस चीजों पर कौन से सेक्टर्स को फोकस करें, निफ्टी में बैंकिंग इंडेक्स में क्या लेवल्स हैं, स्टॉक्स कौन से फोकस करें, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद Q&A सेशन होगा। कोई भी सवाल आपका रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्टर आप पूछ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज यूजुअली वी अवॉइड, टाइम अलाउ करेगा डेफिनेटली विल आंसर फ्यू क्वेरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद अ डिस्क्लेमर फर्स्ट. The information which we are going to share during this presentation is not a trading or investment recommendation. So please check with your financial advisor before you make any decision based on the information shared. तो जो भी हम बात करने वाले हैं ये एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले. नाउ कमिंग टू द मार्केट snapshot for the entire week. So as you can see, both Nifty Sensex roughly around 1.5% kind of gains, second week of rebound. So a good week for the markets, especially when the other key sector, like in last week it was banking, this week it is IT, and banking continued its move. So this recovery in IT played a critical role, roughly around 5% kind of a gains, followed by pharma, realty, banking and financials, while media, FMCG, metals, auto and energy, they've ended on a negative note. Coming to the Nifty gainers and losers, three names from the IT basket: HCL Tech, Infosys and TCS. Then we have Max Health also alongside with Eternal, that was among the top 5 gainers. On the losing side, in fact, three names from the Tata basket, Tata Motors, Trent, and Tata Consumers. Adani Enterprise and SDFC Life also ended on a negative note. So, इस हफ्ते कहीं ना कहीं अच्छा क्लोज कहेंगे हम मार्केट में, कंसिडरिंग कि बैंकिंग के अलावा जो सेक्टर अभी तक बैकफुट पे था, जिसकी काफी ज्यादा वेटेज है इंडेक्स में, आईटी, उसने एक रीबाउंड दिखाया, जिसकी वजह से हमने देखा करीब आधे परसेंट के गेन के साथ, 1.5% के गेन के साथ बोथ निफ्टी और सेंसेक्स बंद कर पाए. आईटी में जैसे आप देख रहे हैं कि 5% के गेन, उसके बाद सबके मॉडस्ट गेन करीब रफली अराउंड 1.5% से 2% के बीच में. लूजिंग साइड पे केवल मीडिया का ही थोड़ा सा शार्प कट रहा, अदरवाइज म्यूटेड क्लोज रहे हैं अक्रॉस सेक्टर. टॉप 5 गेनर्स में जैसे कि आप देख रहे हैं कि आईटी के नाम, उनका बोलबाला रहा. वहीं लूजिंग साइड पे आपके टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, जहां पे कि आपने प्रॉफिट टेकिंग देखी. नाउ लेट्स जंप टू द क्रिटिकल पार्ट. वेयर आर वी हेडिंग व्हेन इट कम्स टू निफ्टी इंडेक्स, बैंकिंग इंडेक्स, key areas to focus on. So last time, if you remember, we were discussing about 25, 150, 250 being the hurdle. So we have crossed all the mark, and now we are inching towards this trend line hurdle. This red line, as you can see on the chart, last time we were very close to that mark, roughly around 25,400, 450 zone. Similar to that area is something that trend line still exists. So in case if market manages to cross this level decisively, then this June month high close to around 25,670 is something that the market is going to attempt, and may inch higher also. But as of now, it seems like this two area, means 25,450 to 650, 670 is going to be the resistance zone for the week. Tone looks positive.
Now, support-wise, this is something which is positive for us, means this yellow line, as you can see on the screen, that has shifted to 25,000 mark. So that's the first line of defense, 25,020 EMA. And in case if it breaks, then 100 EMA, roughly around 24,750. So buy on dip is something that you should maintain until we break this 25,000 mark. तो देखिए, इस हफ्ते जिस तरीके से हमने तेजी देखी कंसोलिडेशन के फेज के बाद, अब इंडिकेशन यही है कि ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका क्रॉस होना डिसाइड करेगा कि ये मोमेंटम कैरी करेगा या फिर यहाँ से दोबारा से मार्केट गिरेगा, राइट। तो ये 25,450 ऊपर के साइड पे और नीचे पे ये 25,000, ये टिपिकली 450 पॉइंट का जो रेंज है, मार्केट अभी इसमें प्ले करेगा। जिस साइड ब्रेक आएगा उस साइड पे मूव रहेगा। अभी तक इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन पॉजिटिव साइड पे ज्यादा है, मींस कि 450 को एक बार ब्रेक करके 650 तक के लेवल तक अटेम्प्ट करे मार्केट, इस चीज का पोटेंशियल है। ऑफ कोर्स अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, कल टीसीएस के नंबर आए थे, आज थोड़ा सा म्यूटेड क्लोज हुआ है। आईटी पैक गिरा नहीं है, अच्छी बात है, बिकॉज 4-5% की रैली ऑलरेडी आ गई थी, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा फैक्टर रहा। अब आने वाले दिनों में आईटी मेजर्स और आपके बैंकिंग मेजर्स, इन सबके रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी के हिसाब से देखिए टोन पॉजिटिव लग रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हमने बात भी की थी इस चीज की, कि जो लास्ट 3 लोज हैं हमारे, वो ऊपर के बने हैं, मींस कि जितनी बार जो सेलर्स हैं वो एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, बायर्स उनको एक लेवल पहले ऊपर रोक देते हैं। तो ये हुआ था, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी करीब 350 के पास, फिर ये 400, इस बार ये 600 पे ही रोक दिया था उन्होंने सेलर्स को, और वहां से रिकवरी आ गई, राइट। तो हाइज भी ऊपर के बन रहे थे अपने, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस बार क्या नया हाई बनेगा, मींस दोबारा 650 तक के जाएंगे। इंडिकेशन अभी उस चीज के फेवर में ज्यादा है, राइट। तो बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 25,000 को ध्यान रखिए नीचे पे, 450, 25,450 को ऊपर की साइड पे, और तब तक बाय ऑन डिप्स आपको मेंटेन करना, राइट। नेक्स्ट कम्स बैंकिंग। सो दिस इज important because IT, after this rebound, again, like now the other IT majors like HCL Tech, Infosys, they'll announce their numbers in coming weeks. So banking, after this recent consolidation and gradual up move, last week we were discussing about 56,000, 56,200 mark. So after testing that area, we spent some time in a very tight range, and today on Friday we saw that the move extended. So positive tone, private banking majors like HDFC, ICICI also participating in the move. PSUs, like what we have discussed last week, are outperforming by clear margins, and we expect this outperformance to further continue, means the PSUs may continue to outperform in the coming week as well. But at the same time, banking index is also gradually inching towards this record high. So means we are roughly around 1,000 points away from the record high, right? So basis this recent consolidation, the overall positive tone across the private banking majors, PSUs, we recommend maintaining a positive outlook towards banking space as well. And that's the reason why we are hopeful that Nifty is going to break this 25,450 barrier this time and inch toward 25,650. Because IT, obviously, it's still not a very clear trend, but banking looks comparatively better. तो देखिए बैंकिंग, जैसे कि हमने बात की कि लास्ट टाइम 56,000, 56,200 के लेवल्स, इनको ये ब्रेक करता है तो 56,600, तो दोनों ही लेवल्स आ गए, जो कि लास्ट वीक अगर आप जाएंगे और वीडियो को देखेंगे तो ये दोनों ही लेवल आपको मिलेंगे कि इन लेवल्स का टेस्ट पॉसिबल है ऊपर के साइड पे। तो अब यहाँ से 56,000 के पास बेस बनाने के बाद एंटिसिपेशन ये है कि अब ये रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़े अपना बैंकिंग इंडेक्स। क्यों? क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स ने भी पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया है। अभी तक पीएसयूज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अक्रॉस द बोर्ड, अब प्राइवेट का भी पार्टिसिपेशन है जिनका वेटेज है बैंकिंग इंडेक्स में, राइट। 1,000 पॉइंट्स करीब दूर हैं हम अपने रिकॉर्ड हाई से। तो
इंडिकेशन तो यही है कि ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगा आने वाले टाइम में। यहाँ पे आपको 56,000 को एक या 55,800 टू बी प्रिसाइज आपका एरिया ध्यान रखना है। जब तक कि इसके ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स मेंटेन करिए, फोकस रखिए ज्यादातर अभी भी पीएसयूज पे। ये काफी टाइम बाद हो रहा है, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ काफी हफ्तों से लगातार कि अ, पहले मैं हमेशा आपको प्राइवेट बैंक्स को फोकस करने में बेसिस देयर आउट परफॉर्मेंस कहता था। अभी वो आउट परफॉर्मेंस पीएसयूज में दिख रही है, तो उसी पे फोकस करना समझदारी है। जैसे कि आज एसबीआई में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया, साउथ इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सभी में मतलब एक कंसिस्टेंसी दिख रही है। तो बैंकिंग व्यू पॉजिटिव है एंड पीएसयूज इज समथिंग दैट यू शुड प्रेफर। अपसाइड पे 57,300, 57,700, these are the area, these are the levels that we are targeting, right? Now let's talk about stocks which you should be focusing basis the risk to reward ratio, cause now we are into the earning season. देखिए अब अर्निंग सीजन में और नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में क्या डिफरेंस होता है कि मार्केट का टोन जैसा भी हो, अगर स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे या बुरे आए उसका रिएक्शन एक अलग होता है। तो हो सकता है कि निफ्टी गिर रही हो फॉर सम रीजन, बट अगर आपके स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आ गया तो फिर वहां पे आपको तेजी देखने को मिलती है। तो अर्निंग सीजन में सरप्राइजेस बहुत होते हैं दोनों ही साइड पे, मतलब सरप्राइजेस भी होते हैं, शॉक भी होते हैं। तो यहाँ पे इट्स मोर इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द अर्निंग सीजन दैट stocks where risk is comparatively low, as in they are not overstretched or there is a potential of reversal or a breakout. So first, stock on that list is Oro Pharma. So today we were seeing that some of these pharma counters were seeing traction, and Oro Pharma has also witnessed decent rebound of late, roughly around 3%. As you can see that after this phenomenal up move, right, roughly around from sub 400 to 1500 plus mark, then this phase of consolidation. Now we have started seeing that the downside is capped, means every time we slip closer to around 1050,000 levels, buyers emerge and help the stock to inch higher. So it seems like the consolidation or the accumulation is over now, and gradually the stock should attempt up move towards 1250, 1300. So here the downside is capped, means now this 1000, 20, 30 area is where the last swing low, where one can place the stop losses and look for a rebound. तो देखिए यहाँ पे जब अर्निंग सीजन की शुरुआत होती है ना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन को कैसे मैनेज करें, क्योंकि वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा होती है। मींस इंडेक्स से स्टॉक्स का कोई लेना देना नहीं होता इस टाइम पे। जैसे जैसे नंबर्स आ रहे होते हैं वैसे वैसे स्टॉक्स का रिएक्शन आता है। तो इस टाइम पे स्टॉक सिलेक्शन और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा भी अगर आपने गलत पिक किया तो मार्केट पनिश बहुत शार्पली करती है। तो ऐसे स्टॉक्स जिनमें कुशन हो, चाहे वो सपोर्ट के पास हैं या जहां पे बाइंग है, अगर रिकॉर्ड हाइस के पास भी हैं बट वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, बायर्स हैं उसमें, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चल रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे ऑरो फार्मा अपने सपोर्ट्स के पास है, 1050, 1020 का जो लेवल लास्ट टाइम उसने टेस्ट किया है करेक्टिव फेज झेलने के बाद, उसको बार बार ये रिस्पेक्ट कर रहा है और काफी टाइटली इस रेंज को ये होल्ड कर रहा है। तो इंडिकेशन ये है कि यहाँ से एक रीबाउंड आ सकता है आने वाले टाइम में, तो इसको आपको फोकस करना चाहिए और विंडो फार्मा को। सेकेंड ऑन द लिस्ट फ्रॉम द डिफेंस बास्केट, BEL. So this stock is among the top performer within the defense basket. There's no doubt about it. And still, during this rebound also in the defense space, it has rebounded very strongly. And now, as you can see, that it's been almost like 2-3 weeks. It's trading in a very tight range here while holding above its 20 EMA.
Indications are now pointing toward this phase also to end, and the stock might inch toward a new record highs. देखिए, मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब मार्केट की करेक्शन चल रही है, जैसे निफ्टी आपने देखा कि बीच में अभी नीचे आया, तो उस टाइम पे बीएल ने क्या किया, उस टाइम पे रेंज में चला गया, कुछ खास गिरावट नहीं हुई। मीन्स 410 से आपका ये 400 तक के लेवल आए, और उसी रेंज में फिर ये इसने अपना टाइम स्पेंड करना शुरू किया, और अब यहाँ से दोबारा से तेजी की शुरुआत कर रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो कि इंडेक्स की गिरावट के साथ या फिर अपने सेक्टर की गिरावट में पार्टिसिपेट ना करते हुए रेंज में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा से अपना तेजी का दौर आते ही सबसे पहले चलने की भी शुरुआत करते हैं। तो बीईएल एक ऐसा ही कैंडिडेट है डिफेंस बास्केट में, जिसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है बेसिस द रीसेंट प्राइस एक्शन की ये अपने नए हाइस को जल्दी ही छू ले। तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। लास्टली ऑन द लिस्ट, PSU बैंकिंग स्पेस, जैसे कि मैंने बोला था, इन द लास्ट 3 weeks वी हैव टॉक्ड अबाउट सेवरल PSUs, SBI, Canara Bank, Bank of Baroda. This time around it's PNB. So after a long corrective phase, there was a phase of trend reversal, then again a consolidation phase where it formed a higher base, and finally a breakout from the same as well. So this indicates, see, initially we were targeting the first performers, first leg of the performers, means the top names, SBI, Canara Bank, Bank of Baroda. They were among the top names because they are trading closer to their record highs. They have done well, and we expect that outperformance to continue also. But here we have some of the candidates like PNB, where we can see catch-up move, and the risk reward is also favorable. Means since they are fresh out from a consolidation range, we may see fresh up move. So basis that, PNB is also something that one can look to accumulate. तो देखिए, जैसे कि हमने PSU बैंक्स की काफी ज्यादा बात की है पिछले करीब 5-6 वेबिनार्स में, और जिसमें ज्यादातर बड़े नाम हमने ऑलरेडी शेयर किए थे, चाहे वो SBI हो, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो। अब PNB लग रहा है कि जैसे इन सब बड़े नामों के बाद अब यहाँ पे भी आपको ट्रैक्शन आते हुए नजर आएगा। यूको बैंक, यूनियन बैंक, PNB, इन सब में भी एक रीबाउंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो एक ग्रेजुअल अप मूव जो कि स्टॉक को करीब 125-130 के लेवल दोबारा तक लेके जाए, उस तरीके के इंडिकेशंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं फॉर द कमिंग वीक ऑन द लॉन्ग साइड, राइट? सो जस्ट टू सम इट अप, both Nifty and banking index view is positive. For Nifty, 25,000 is the key support area, that 20 EMA mark, or the moment will cross 25,450. Next leg of momentum towards 25,650 or maybe higher is something that the Nifty may trigger. Banking also looks positive, means we are inching towards the record highs. So in banking also, one should continue with buy on dips approach until we break 55,800. Right? So 25,000, 55,800 is something that you should keep in your mind. Talking about stocks, Oro Pharma, BEL, PNB, all stocks are looking upbeat for further up move. देखिए, निफ्टी में 25,000, बैंकिंग इंडेक्स में 55,800, ये दो लेवल आपको ध्यान रखने हैं। जब तक इनके ऊपर है मार्केट, तब तक पॉजिटिव साइड के ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए मार्केट में। नो डाउट अर्निंग की वजह से वॉलिटिलिटी रहेगी स्टॉक स्पेसिफिक, तो जिस दिन आपके स्टॉक का रिजल्ट है, खासतौर से उस दिन ज्यादा एडवेंचर उसमें ना करें, थोड़ा सा कॉशन रखें। और स्टॉक स्पेसिफिक जो हमने बात की है, औरो फार्मा की, बीईएल की या पीएनबी की, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं लॉन्ग साइड की पोजीशंस के लिए। तो आज की प्रेजेंटेशन में अभी इतना ही। जल्दी से एक फीडबैक लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं Q&A सेशन। तो आप अपना फीडबैक शेयर कर दीजिए, और उसके बाद कोई भी सवाल है आपका, तो जो Q&A क्वेश्चन मार्क एक बटन बना हुआ है, उसको आप प्रेस करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। कोशिश करिए कि वो स्टॉक स्पेसिफिक ना हो, के सेक्टर स्पेसिफिक हो, सो दैट कि मेजॉरिटी जितने भी हैं हम अपना वेबिनार में, उन सबको एडवांटेज मिले।
Those who are done with the feedback, they can start posting their questions using that Q&A button. जिनका हो गया है फीडबैक, वो अपना सवाल के लिए पूछ सकते हैं Q&A बटन दबा के. All right, so we are almost done with feedbacks. Okay, let's start with Q&A now. So first question we have on capital markets from Nikunj Parmar. Thank you for the feedback as well. So capital market stocks, Nikunj, definitely we are again seeing traction after this recent phase of corrective tone. So stock like BSC, CDSL, brokerage stocks, all are witnessing traction, but one needs to be slightly cautious considering the volatility that majority of these names experience. So if your view is short term and you are okay taking risk with the high beta names, you can continue to look for long positions in especially in stocks like BSC, CDSL, MCX, wherein we are seeing strength. But at the same time, as like what I mentioned, the possibility of volatile swings is still high. So be very strict with your stop losses. Okay, next we have Mr. Ashish Sharma on FMCG sector. It's not doing anything. That's true even after the GST cut. Yes, so see, any type of reform takes time to unfold and show its impact on ground. Means how this GST cuts are going to impact the volumes for the FMCG players. You might hear from the management in the coming weeks during the earnings season. So I feel that maybe 3 months, 6 months down the line, you will start hearing its impact in case if it actually goes down to the customers. So for a time being, I feel that this underperformance which we are seeing in FMCG, it might continue. It all depends how the earning is going to pan out for most of these names. So focus more on earnings now for any clues on sign of recovery in FMCG space. Until then, selective stocks like Britannia, Marico, wherein we were seeing strength, you may pick selectively. Otherwise, you may avoid if the view is short term. Okay, next we have Mr. Gaurav Agarwal. So obviously, we've talked about PSU Bank and SBI is leading from the front. So we have positive view, no doubt, regarding the entire space. In fact, the stocks which were sitting on the sidelines within the PSU banking basket, they have also started performing. So we expect this entire pack to continue their positive tone and SBI, Canara Bank to lead this surge along with Indian Bank. Right. So top 3 names from the very short term perspective basis the price action are SBI, Canara Bank and Indian Bank within the PSU banking basket. Yeah, and South Indian Bank to post this today's surge means phenomenal surge with volumes. So hope it answers your query. Okay, next we have Snehansh Kapadia. Nowadays, clients sell shares and buy silver Bs and gold Bs. Is it advisable? So now, Snehansh, it's a classic indication that
we are very close to the immediate highs or tops in silver and gold, right? So I'm not saying that tomorrow you go short in gold and silver and sell your investments. But in case if clients are or investors are moving out from one segment, citing the outperformance of the other segment, it's a clear sign that the segment which is underperforming may outperform in next 1 year. If somebody is diversifying by buying in silver or gold ETFs, that is completely okay. But in case if they're completely switching their position, that is not at all advisable at current levels, right? So hedging or diversifying is different. Completing your equity position into completely into commodities is something which is very risky at current levels. Okay, next, how can we select a stock for short term? So, sorry, it's Ramalakshmi. See, there's no fixed answer to this question. Means there are multiple ways that one can do. Means some people prefer momentum, so they look for stocks which are initially in 15-20 minutes are gaining traction in the market, and they try to ride the momentum. Then we have various mechanisms. So it's not a very fixed set of rule, uh, especially during different market scenario. We have to adapt ourselves. That at times you see breakout playing out well. Breakout means the stock is trading in a range, and then the moment it breaks out or break down from that range, we see a directional move. So, but that might not hold true when the market overall is under consolidation. So we might see those breakout and breakdown period. So since there's no clear shortcut, the best advice which I can offer is, in case if you are associated with us with Religare, we share clear and actionable trading recommendation with stop losses and targets which you can follow for short term. Okay, thank you, Mr. Abhay Kumar, for your feedback. And now for the auto and auto components ancillary part, see 3-4 sectors: metal, auto, and PSUs. May we have OMCs, oil marketing companies, select defense-related counters, banking. I feel that they might continue to outperform, and the rotational binds. Sorry, I missed metal in that list in the coming weeks as well. So auto is something that you should definitely keep on your radar. There could be a bit of consolidation or a pause basis their strong surge that majority of this stock experienced in the recent past. But broadly, the trend is positive, so one can continue to accumulate any dip, let's say 5-6% kind of a dip in stock like Eicher, Maruti, TVS, Hero Motoko is something that one can continue to look for such opportunities until we see some decisive sign of distribution or any negative surprises from the earning front. So which seems unlikely as of now. So yes, you can continue with your long exposure in auto and ancillary space. Okay, we have anonymous attendee who is asking about a similar question to what we were answering earlier. Here, how we can learn technical patterns. So see, nowadays, so we have ample of resource available for free, over internet.
But I always recommend, in case somebody asks me for a suggestion, that there is a book called Technical Analysis A to Z. It's a very basic layman language written book, means suited for anybody who have not read anything about technical analysis before. So you can start with that, and gradually you can start reading the articles first, because book becomes slightly boring. You might lose interest after the initial few pages. So just scroll through the articles, wherein people talk about technical patterns or technical analysis. So that might help you to at least prepare a ground. Okay, next we have Rajnikant Reddy ji on PSU Bank. So that, Mr. Reddy, we have already answered that we have a bullish view, and some of these stocks which are not participating yet in this rally, so they might participate, but the quantum is going to be less, in comparison to the performers. So like SBI, Canara Bank, Indian Bank, they are among the top performing name at present. Then falls, Bank of Baroda, PNB, Union Bank, and lastly, then we have Bank of India, Central Bank, UCO, etc. So as of now, they fall last in that list. So their performance is going to be uh, much lesser in comparison to the leaders. Okay, so this is what the indications are. So one should act accordingly, when it comes to the investments. Mr. Nikunj, you can write to us, or you can DM your ID, or you can write to us on vcare@religareonline.com also, and they'll help you out with all the support that you require related to your investment. So we provide all the services. Broking is one part, then everything which comes under wealth management, be it PMS, AIFs, structured products, everything is something that you get from our platform. So you can definitely get in touch with us through various mode. You can ping us on our social channels also, and the team will get in touch with you. Okay, next we have Vijay Ramalingam. So pharma, not a very decisive performance so far, and so uh, is the case for Natco also. Uh, we have started seeing some traction. Means today it was Divis Cipla which was showing a decent amount of buying interest, but as a pack, I feel that one should be uh, slightly cautious, because again we are into the earning season, and there could be volatile swings. Stick with the top names, performers basically. So within the pharma, uh, Oro, Cipla, Dr. Reddy's, Divis, Sun Pharma, Lupin, these are some of the names which looks okay to me, right? So avoid the other names as of now if the view is short term. Okay, next we have mid cap IT space. So see, the earning season have just begun, Mr. Yogesh. So we should wait and see how this situation spans out with results in the other IT majors, and then the mid cap IT names. So as of now, since they are highly volatile in comparison to the IT majors, the prudent approach is to wait and watch. Avoid any aggressive bets in mid cap IT, at least in the near future. Okay. Next, we have Mr. Rajesh. As the trade talks are steady between India and, can we think of making position in textile sector? So, see, it's very
this news-based movement usually fizzle out in a day or two. So my suggestion is to refrain from taking bets basis those assumptions. Yes, textile stocks, gems and jewelry, export related counters may see traction for the initial uptick the moment we might hear something positive on that front. But a sustained move seems unlikely. Means uh, usually we see that these kinds of move fizzle out in a day or two. So my suggestion is to stick with the top sectors and themes which are showing consistency in the trend. All right. So hope this answers your query. And with this, we have answered all the queries. Yes, I guess. Yeah. So thank you everyone for joining in. And next week, same time, we'll connect again. We'll talk about markets and other details. Till then, take care. Thank you. Thank you once again.